फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I am Suramya Kaushik. It's time to gear up for the big ticket clash, India versus Pakistan in Asia Cup 2023. It's the second time these two teams are coming up against each other, but there is a threat of rain. Will rain play a spoil sport or not? Let's hear it out from former cricketer Chaitanya Nanda and senior sports journalist Vidanshu Kumar. Hello, Chaitanya. Hello, Vidanshu. I am all set for the big clash. I guess you are also set for the big clash. Everyone's waiting for a good match. Well, Chaitanya, this match has the luxury of a reserve day, the only match in Super 4 which has got a reserve day. But I think the sky is clear out there in Colombo. What are the latest reports and updates from there? As it was supposed to rain from complete weekend, but it has not rained from Friday evening, so I think it should stay clear. I hope, because this is the biggest match. It shows when you have a reserve day only for this match and the finals. It shows how important this match is. People are saying it should not be there. It is biased, but it's about people. It's about the game which people want to see. So I think it's not a bad idea. It's okay, because everybody's curious to see this India-Pakistan play, and this is a luxury what we got. Unfortunately, last match got washed out. We're not able to see Pakistan back. But अगर आप देखें तो काफी समय से इंडिया पाकिस्तान bilateral नहीं खेलता है, तो one as this thing happening, it's kind of a bilateral kind of a thing कि इंडिया दोबारा खेल रही है, उसके फाइनल खेल सकती है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मौका था, और इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान सिर्फ मैच नहीं है, ये बहुत बड़ा इवेंट है. यहाँ पे जो एक नॉर्मल प्लेयर होता है वो अपने आप को, या स्टार होता है वो अपने आप को मेगा स्टार या सुपर स्टार बना सकता है बहुत इजीली. एंड we have seen that now. Ishan Kishan, who was somewhere in between, now is on the top of everybody's list. So I think this shows how important this game is. Absolutely, it's a very important game. Now, Vedanshu, you have covered so much cricket. I was looking at the comments of some former cricketers and some senior journalists. They were saying it's the first time a reserve day has been given. It's the first time that the rules have been changed in mid of a tournament. What are your thoughts on it? It's a great match. It's a big match. But do you think it's justified for both the teams to get this reserve day if it rains today? Because right now the sky is clear. Yes, no doubt that this is the first time when a reserve day has been allotted middle of the tournament, and usually this doesn't happen. That's the hue and cry. But the point that I raised last time also on the show is, suppose there's a chance of a washout, and suppose you have got a one match that can be played because it has 2 days, and this one match is no other match. It is India versus Pakistan. It is the biggest matches, as Chaitanya said. It is bigger than Ashes. And when did last time India play Pakistan? Do you remember? It was in England 2019. It's 4 years. And so if this is the duration when these teams are playing, so why not have a reserve day? It is unfair on the other teams. But we have been hearing reports that they also did not want to travel, whatnot. Everything has not come out. Even if it is unfair on the other two teams, I think it is the biggest match of the tournament. The final and this one has a reserve day. It is good and fine. I think we should stop arguing about this and let's go on with the match. Absolutely. I think that's where the whole point lies. That's a big match. And as Vidanshu said, it's bigger than the Ashes, and we are all waiting for the match to start soon. Now, as we can see the visuals over here, Chaitanya, from 2019 to 2023, a lot has been changed with both the teams, be it India, be it Pakistan. But here I'll talk about Pakistan. हमने जिस तरह की पाकिस्तान की टीम देखी है 2019 में और जो अब देख रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है. Right now, people are saying this Pakistan team is the best team here in the Asia Cup. What are your thoughts? Because if you see all the last matches, they have showcased why their batting is good, why their bowling is good. And when I'm talking about bowling, their fast bowlers, their pacers are unstoppable. See, first of all, we have to see this why they are doing good as a bowling unit and batting unit, because they are playing continuously with the same team. They are not experimenting too much. They are keeping the same players in all the matches. When you play as a team, as a same members,
You understand each other very well. You understand your roles betterly. You understand what to do, what not to do. When somebody is not doing well, then what I have to do. There are different kinds of situations comes every game. So when you keep playing together, then you understand. Yeah, ठीक है, इस वाली situation में I will put my hand up or I will go on the back seat. So this is what happens. And secondly, as you said, this team of Pakistan. अभी तक आपने इसको इंडिया की, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, आपने इनको प्रेशर में नहीं डाला. मैं बार बार बोल रहा हूँ, दे हैव fast bowling right now with Shaheen Afridi, Nazeem Shah, and Harris Raw. We have seen when Virat started hitting them and Hardik Pandya hitting them, they had no clue where to go, what to do. We have seen they lost the match where they have been winning one-sidedly. तो जब तक आप इस टीम को प्रेशर में नहीं डालेंगे ना, ये कैसे ब्रेक होता है आपको नहीं पता चलेगा. बट आई एम टेलिंग यू, इफ दिस टीम गोज अंडर प्रेशर, इफ शाहीन अफरीदी गोज 20 runs in first over or 15 runs in first over, Nazeem Shah goes for a run, then it will be interesting to see how this team comes back. Because Pakistan को अगर आप देखें तो पाकिस्तान शुरू से ना एक flamboyant team रही है, which has a flamboyant, they play aggressive cricket, but when they are they've been broken, वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं. उनको वापस इकट्ठा करना नहीं आता अपने आप को. They are not able to come back as a team. That's the problem with the Pakistan completely throughout the time. When they won the World Cup, it's only Imran Khan knew how to get them back as a unit when they are broken. But उसके बाद से हमने नहीं देखा कि कोई भी ऐसा कप्तान उनको मिला हो, जब वो बिखरते हैं तो इनको इकट्ठा करके दोबारा मैच में लेके आ पाए. ऐसे बहुत रेयर होता है. और आप बैटिंग, and I think Chaitanya, if you see the first match of India Pakistan as well, उसमें भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, they found out कि कुछ ना कुछ loophole है, and that's why they made runs. Because आपके पास pacers थे, आपने उनके against आप struggle कर रहे थे, but then you found out कि यहाँ पर अगर हम spinner को attack करते हैं तो हम runs बना सकते हैं, and that's what they did in the first match. Well, the toss has happened. Pakistan have won the toss. They have opted to bowl first. Vidhanshu, how you are seeing this decision from the Pakistan side? I think any team that would have won the toss, वो पहले bowling करना चाहते because of rain, क्योंकि बाद में आप जब chase करेंगे तो आपको टारगेट पता है, टारगेट बार बार बदलता रहेगा. तो उस लिहाज से अगर रोहित शर्मा भी टॉस जीतते तो पहले शायद बॉलिंग ही करते. लेकिन फिर भी ठीक है, इंडिया को अच्छी बैटिंग कंडीशन अभी मिल रही है because it's bright sunshine. Hope it stays like that, and so India can have that advantage with a good bright start. And so these pacers, चैतन्य made a very interesting point कि अगर आप इस टीम को प्रेशर में डालेंगे तो बिगड़ सकती है, और वही चीज भारतीय टीम को भी करना पड़ेगा. और हमारे पास अच्छे बैटर्स हैं जो कि अपना नेचुरल गेम खेले, दब के ना खेले, जो पिछले मैच में देखा, तो वो इस बॉलिंग अटैक को भी प्रेशर में डाल सकते हैं. आप अगर 2 साल या 2.5 साल पहले जाएंगे, शुभमन गिल ने शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी पिटाई लगाई थी न्यूजीलैंड में 2000 अंडर-19 क्रिकेट में. आप कह सकते हैं उसके बाद से शाहीन शाह अफरीदी ने ज्यादा पेस गैदर किया है, ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर बन गए. लेकिन वही हाल तो शुभमन गिल का भी रहा है. वो भी एज ए बैट्समैन वो भी इंप्रूव करें. ठीक है, अभी पिछले कुछ समय में उनके रन नहीं मिले कुछ मैचों में. उससे पहले उनका जो स्ट्रीक था कितना स्ट्रांग था. तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है. इंडियन टीम को कहीं से भी दबके नहीं रहना है. और मैं इस आर्गुमेंट से भी साथ ही सब्सक्राइब नहीं करता कि पाकिस्तान की टीम फेवरेट है या स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रही है. उनकी बॉलिंग जरूर अच्छी नजर आ रही है भारत के मुकाबले या बाकी टीमों के मुकाबले, लेकिन वहां पे भी एक लूपहोल है. शादाब के बारे में बात की, और जो उनका चौथा बॉलर है, उनको आपने खुद कहा कि पिछले मैच में किस तरह से हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने एक्सप्लॉइट किया. वो जो 20 ओवर थे, वो 20 ओवर उनके पास भी वो डालना मुश्किल है. मुझे लगता है ये इक्वल टीम है. दोनों ही टीम अभी लगभग बराबर ही खेल रही है, और भारतीय टीम इस मैच को जीत सकती है. मुझे उसकी पूरी संभावना नजर आ रही है. Absolutely. And Vidhanshu, जैसे आपने बैटिंग के बारे में बात करी, we have playing 11 of Pakistan over here. I think आपने अभी तक फकर जमान के तरफ से कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा है. He has had a good year, but he hasn't had a good month, last month or so. So if you see Pakistan side, I've seen good performances from Babar Azam, Iftikhar Ahmed, obviously in the first match that they played here in Asia Cup. But फकर जमान, इमाम, इनकी तरफ से अगर परफॉर्मेंसेस नहीं रहे तो आपके पास वही फिर बच जाते हैं, बाबर आजम और रिजवान एंड देन Iftikhar Ahmed. So that is the loophole there. फकर जमान इज अ बिग प्लेयर अगेंस्ट इंडिया. इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत शानदार शतक, और जब वो
खेलते हैं तो फिर बहुत बड़े रन्स बनाते हैं। तो डेंजरस प्लेयर जरूर है, भारत के लिए अच्छा है कि अभी पिछले कुछ मैचेस में वो रन्स नहीं कर रहे हैं। देखिए दूसरे टीम के पास भी अच्छे बैटर्स होंगे, वही तो क्रिकेट का मजा है। 50 ओवर खेलना है, बिल्कुल। उनकी टीम की रन्स बनाएंगी। आपको ये देखना है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ दी इसमें ना चले जाए कि ठोके जा रहे चौके पे चौका, ऐसा नहीं। आपको उनको अच्छे से रीजनेबल एक उस रखना पड़ेगा। फिलहाल तो भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल। किस तरह से और यहाँ पर बॉलर्स बिग अपडेट भी है कि श्रेयस अय्यर नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है आज, बैक स्पैज्म है उनको, केएल राहुल आए हैं। चैतन्य, केएल राहुल के बारे में बहुत सुना है मैंने पिछले दिनों में, जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ तब अजीत अगरकर ने कहा दैट ही वाज कीपिंग विकेट्स फॉर 50 ओवर्स, ही बैटेड फॉर ऑलमोस्ट 50 ओवर्स इन लास्ट few days or so. I heard a lot about KL Rahul, that he's been batting well, he's been keeping well. Now he's in the team, but nobody has seen KL Rahul from so long. And out of nowhere, I would not say out of nowhere, people were expecting KL Rahul to be in the team. But were you expecting Shreyas Iyer to go out and KL Rahul to come in for whatsoever reasons? I think Indian management is surprisingly confused. I will say, I will use the word. मतलब अगर नॉर्मल बात में कहेंगे तो मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी नहीं मैंने देखी जो इंडियन टीम कर रही है। और अभी जैसे बैक स्पाज्म भी कह रहे हैं, अगर वो इंजर्ड है यहाँ पे, वो भी एक चैतन्य, वो भी एक एक वरी का साइन है। और आपने रोहित का अगर आप कमेंट सुनेंगे तो उन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर हम टॉस जीत भी जाते तो हम बैटिंग ही करते। तो आई थिंक दे हैव सम डिफरेंट माइंड फ्रेम राइट नाउ। वो खुद ही समझना चाहेंगे वो क्या करना चाहते हैं। सी रोहित इज नॉट इन गुड फॉर्म। उसके एक्चुअली इंडिया क्यों पहले बैटिंग करना चाहती है, क्योंकि उनको अपने बॉलिंग पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है राइट नाउ, बिकॉज देयर बॉलर्स लुक मोर इन फॉर्म देन देयर बैटर्स। So that might be a reason they wanted to do it even in rain curtailed matches। और उनको पता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये मैच अगर आज पूरा नहीं होगा तो कल भी पूरा होगा। तो अगर कल बारिश नहीं होती है तो दोबारा पूरा मैच देख सकते हैं हम। ऐसा है कि अगर आज आधी बैटिंग होगी कल दोबारा हो जाएगा, ऐसा एक रूल था अभी जो मैंने पढ़ा। लेकिन उसमें ये है चैतन्य, सॉरी, इसमें कंडीशन ये है कि एम्पायर्स आज ही मैच पूरा कराने की कोशिश करेंगे, यानी जो ओवर्स घटाने वाला काम है वो आज वो करना शुरू कर देंगे, तो टारगेट रिवाइज होगा। एंड आई थिंक एक 90 मिनट का टाइम भी है, एक्सटेंशन टाइम भी है 90 मिनट्स का, कि जो आपका एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है उससे ज्यादा 90 मिनट्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सो मोस्ट लाइकली आज ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर ज्यादा बारिश होती है तो कल जाएगा। सो यस चैतन्य, गिवन दैट आपको लगता है कि ये सही जो कमेंट दिया रोहित शर्मा ने वो सही था कि नहीं? मतलब कहीं से भी सही नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या दिमाग में है। If you want me to speak like expert, then I will, you know, put my words in a cotton wrap and say it in a very, very nice words. But if you want me to hear as a cricket lover, just as a fan or as a person, what I really feel, it's a complete बेवकूफी। आप पहली बात आइए, अय्यर आपके जो प्लेयर है, पहले तो ये जो फैसला है कि हम पहले बैटिंग करेंगे वो साफ दर्शाता है कि आपको अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको बॉलिंग पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। चलिए बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। दूसरी बात अय्यर की वापसी, सॉरी अय्यर को वापसी लेके आते हो आप। अय्यर अच्छी बैटिंग करते हो देखते हैं पिछले मैच में, उनके बैट पे सबसे अच्छी गेंद लग रही होती है। ही वाज मिडलिंग द बॉल बेस्ट, बट अब आउट हो जाते हैं। आज जब वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उस फॉर्म को, तो आप केएल राहुल को खिलाना चाहते हैं उनकी जगह पे, बिकॉज यू वांट टू सी हाउ केएल राहुल परफॉर्म्स, हाउ ही कीप्स एंड एवरीथिंग। और एक ऐसा क्रूशियल मैच है, अगर यहाँ पे आप हार जाते हैं आज तो आपको अगले दोनों मैच दिख रहे होंगे, बहुत क्रूशियल होगा। कोई बारिश हो गई, कुछ हो गया, then you might be out of this tournament. So you have absolutely, and given how Sri Lanka are playing, you saw how Sri Lanka are playing, they are continuing their consecutive winning form. Yes, think अगर श्रीलंका पाकिस्तान का मैच वॉश आउट हो जाता है, उनको एक पॉइंट मिल जाता है, इंडिया के आने वाले एक दो मैच वॉश आउट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? So you want to put your best team in this match and you are just experimenting still. So for me, India is thinking Asia Cup से कोई मैटर नहीं है, let's make a road to the World Cup. Let's check our batsmen. अगर आज सोचिए केएल राहुल नहीं अच्छी बल्लेबाजी करते तो फिर अगले मैच में केएल राहुल को बाहर बिठाएंगे या केएल राहुल अय्यर को भी लाएंगे, केएल राहुल को भी खिलाएंगे, किसी एक और प्लेयर को बाहर बिठाएंगे। एक्चुअली तो इंडियन मैनेजमेंट चाहती थी कि ईशान किशन को बाहर बिठाएं, लेकिन ईशान किशन की जो परफॉर्मेंस हुई है उसी कारण वो उसको बाहर नहीं बिठा सकते। सो नाउ दे हैव अ पिल इन देयर माउथ व्हिच दे डोंट वांट टू swallow, but they have to swallow it. It being swallowed, not even want to swallow, it being swallowed automatically. So वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत है, उसकी डेस्टिनी है कि वो he is playing so well at the right time. So you have to respect that.
अगर आपको रेस्ट करवाना था आज, तो आप, मुझे लगता है राहुल को ही रेस्ट कराते, क्योंकि आप रोहित शर्मा को फॉर्म की जरूरत है, शुभमन गिल को आपने सेटल कर दिया, आप उसको भी कॉन्फिडेंस शैटर नहीं करना चाहते, विराट कोहली 3 पे ठीक है, 4 पे ठीक है, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट ट्राई कर लेते, आप आज का मैच जीत जाते, आपके पास होता, या आप लास्ट मैच में अगर आप इजीली क्वालिफाई कर रहे होते, वहां पे केएल राहुल को ले आते, यू विल गेट मोर चांसेस। बट आप अपनी बेस्ट टीम खिलाते हैं, और यही प्रॉब्लम हो रही है हमारी क्रिकेट के साथ पिछले कुछ सालों से, कि हम अपनी बेस्ट टीम नहीं खिला रहे हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें टिंकर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। यही डिफरेंस है इंडिया की टीम में और पाकिस्तान की टीम में राइट नाउ। बिल्कुल। वो एक सेट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, हम एक अनसेट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, कि हम हर मैच में कुछ नया कर रहे हैं। और विदांशु, यहाँ पर यही बात अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया की टीम के बारे में, पाकिस्तान ने अपना प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेम रखा है, चाहे जो भी ऑपोजिशन रही हो इस एशिया कप में, अगर छोटी टीम है तो भी, और अगर इंडिया जैसी टीम है तो भी। आप वहीं पे इंडिया की टीम को देखिए कि आपके पास केएल राहुल आए, आपने तुरंत अपने प्लेइंग 11 में चेंज कर दिया। दिस इज अ नोशन दैट हैज बीन गोइंग अराउंड दैट व्हेनेवर अ सीनियर प्लेयर कम्स आउट एंड कम्स बैक आफ्टर इंजरी, तो उनको सबसे पहले जगह दी जाती है, जो यंग है उनको बिठा दिया जाता है। बट डू यू फाइंड इट इवन लॉजिकल, क्योंकि आपके तो प्लेयर्स इंडियन टीम में चैतन्य भी इस बात को मानेंगे, पिछले कुछ साल से, मुझे लगता है 7-8 साल या 5-6 साल, लेट्स पुट इट, एक इंडियन टीम में एक तरह का पैक्ट है, अनरिटन पैक्ट है, कि जो भी सीनियर प्लेयर बाहर जाता है इंजरी या किसी वजह से, उसका राइट है वापस आने का। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर कोई प्लेयर बाय चांस बाहर गया और दूसरा प्लेयर ने आके उसकी जगह पे रन बना दिया, तो इन फॉर्म के साथ आप चलते रहते थे और उस प्लेयर को वापसी करनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप अश्विन का कमेंट सुनेंगे ना, तो उसने क्या बोला कि लोग कह रहे हैं केएल राहुल वापस क्यों आया, वो तो इंजर्ड ही क्रिकेट खेलते हुआ था। तो भाई इंजर्ड तो मैं भी क्रिकेट खेलते हुआ था, तो मैं भी वापस आ जाऊं क्या 2 साल के बाद? नहीं, वही मैं इस चीज की, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, बट आई एम टेलिंग यू आर राइट, आई एम टीम की मेंटालिटी क्या है। आई एम सेइंग यू आर सेइंग राइट थिंग, मैं यही कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट ये दिखाता है कि ये जो प्लेयर्स है ना, ये सोच रहे हैं कि अब ये जो जगह है ना, ये इनकी पक्की हो चुकी है। अश्विन इस तरीके से बात करते हैं जैसे ही इज हिमसेल्फ अ सिलेक्टर राइट नाउ। अरे भाई, आपने उन विकेटों पे मैच खेले हैं जो विकेटें अखाड़ा हैं, अगर ये हरभजन सिंह खेलते ना विकेटों पे, तो सर पे भी बॉल मार देते। So do not forget what you have achieved. You achieved because of few reasons also. So you need to understand that. Don't become a god. Don't give a comment which says so that is what मैच खेलते हुए तो वो वापस आएंगे स्ट्रेट इन। अरे भाई, वो इंजर्ड हुए थे, बट ये वर्ल्ड कप है, कोई एग्जैक्टली बिल्कुल इसी वजह से आप देख रहे हैं, इसी मेंटालिटी की वजह से आप बार इसीलिए केएल राहुल वापस आ रहे हैं। ये एक कंफर्ट जोन है, चाहते हैं एक्चुअली एक कंफर्ट जोन में इंडियन स्टार्स रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके प्लेसेस इतनी इजीली चैलेंज हो जाए, और जो यंगस्टर्स नॉक कर रहा है उसको और उनको लटकाओ, भले ही वो यंगस्टर्स अभी उसका राइट टाइम है। और इसीलिए आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जो टीम में चेंजेस होते हैं वो शायद थोड़े से लेट होते हैं। आपने देखा होगा इंडियन टीम में वर्ल्ड कप के बाद ही राहुल द्रविड़ 95-96 में आया, या उसके बाद आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद भी आप बहुत सारे हमारे सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने अपनी जगह बचाई हुई है, शायद ना बचा पाए। खैर वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल आपके उस आर्गुमेंट से ये रखता हूँ कि श्रेयस अय्यर जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनको आपने इस मैच में ड्रॉप किया। आपने उसका रीजन दिया है भारतीय टीम ने आपसे, मतलब वो कह रहे हैं कि बैक स्पैज्म है। अब अगर बैक स्पैज्म है तो ये भी बहुत बड़ी डेंजरस सी चीज है कि आपके पास केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, दोनों ही अभी उस तरह से फिट नहीं है, और वर्ल्ड कप आपके सामने है। पाकिस्तान ने और आपने वर्ल्ड कप में उन्हें रखा भी है, आपने वर्ल्ड कप में रखा भी है। जी रखा भी है, और होना भी चाहिए था, लेकिन फिटनेस कम्स फर्स्ट। तो क्या उनका फिटनेस लेवल है, या फिर आपने उसको सिर्फ कवर अप किया विद बैक स्पैज्म? बिल्कुल। और this system is flawed. They have to come out of the flaws if they want to do well. They cannot do like this, keep experimenting. For me, I always believed to have a better tomorrow, you have to have a present better. You have to do right things on the right day. आपको आज अच्छा करना है तो अब कल अपने आप अच्छा होगा। आप जीतने की हैबिट तो डालिए। यहाँ हैबिट की बात, यहाँ यही नहीं पता कि मैं कल सुबह उठ के खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, या मुझे एज ए फैन मुझे यही नहीं पता कौन खेलने को मिलेगा, कौन खेलने को दिखेगा। नहीं, और चैतन्य आप दूसरी टीम्स को भी तो देखिए ना, हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हैव ऑलवेज बैक्ड देयर प्लेयर्स। यू सी ऑस्ट्रेलिया, दे ड्रॉप मानस लाबुशिन। यू सी व्हाट्स लाबुशिन इज डूइंग राइट नाउ। यू सी इंग्लैंड, दे
Absolutely. You see what England's doing. England dropped Harry Brook. We have seen how, great a batter he is. But then when it comes to Indian team, they are taking in Shreyas Iyer and KL Rahul, and then coming up in a crucial match like Pakistan and saying that Shreyas Iyer is dealing with back spasm, which means that your key batters are not fit, which means that you're still not ready for the big tournaments like Asia Cup and World Cup. It's a big problem. We have Chetan Narula over there. Chetan, Shreyas Iyer is not there in the team. Back spasm, that's what Rohit Sharma said. What are your comments? It has become a joke, Suramya. Hello to everyone here. It has become an absolute joke. एशिया कप से पहले केएल राहुल को निगल हो गया, आज बैक स्पैज्म हो गया एक ऐसे खिलाड़ी को जो ऑलरेडी बैक सर्जरी से आ रहा है, बैक इंजरी से आ रहा है, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत थी। हमने इस शो में बहुत बार ये डिस्कस किया है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया है कि इन दो खिलाड़ियों के फिटनेस का क्या स्टेटस है, क्या रीजंस हैं कि ये अनफिट थे, इनका स्टेटस क्या है, इनकी रिकवरी टाइम पीरियड क्या है। और मेरे माइंड में हमेशा से ये सस्पिशन रहा है कि दे वर रश्ड बैक टू फिटनेस, द वे दे वर एक्सपेरिमेंटिंग, द वे दे वर नॉट इवन एक्सपेरिमेंटिंग इन अ वे, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने तो कह दिया ना कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं था। द वे दे वर नॉट रियली प्लानिंग कि हम नंबर 4-5 पे तो श्रेयस और केएल राहुल को ही रखेंगे। दे वर रियली श्योर कि ये दोनों फिट हो जाएंगे। A back injury which needed surgery. KL Rahul needed surgery. और 1.5 महीने बाद they are back trying to play. There is no doubt in my mind that they were rushed back to fitness और अब ये सामने आ रहा है। लास्ट वीक जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था, हमने कहा था ये बैटिंग अंडरकुक्ड है। मेरे ख्याल से अब ये वर्ड अंडरकुक्ड भी एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड मेरे को वर्ल्ड कप गायब होता नजर आ रहा है। इस वर्ल्ड कप को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया गया है। एशिया कप तो आप 1 मिनट के लिए भूल ही जाओ। आज इतना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, और अभी हम बैटिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस व्हाट इज हैपनिंग। Absolutely. Vidanshu, I'll come to you, Chaitanya. Vidanshu, when we look at India's playing 11, people are saying that, oh, it's a sweet headache. We have often heard from the coach and, Ajit Agarkar as well. It's a sweet headache to put in perfect 11. But I think the sweet headache is continuously turning into a migraine right now because you don't have players who are fit to be there in the 11. Yeah, sweet headache was there if they were really fit and they were performing to their best. But we have these two players who have had longish, rather breaks that have lasted into many months. So this is not a sweet headache. It is just sweet coding and saying things which people or fans may well understand. So definitely, it's a big problem for India, and they have to think, I think, a little out of the box here, and hope that the players, including KL Rahul, who's going to get a game here, he really shows that he's back in form. He has not kept. In fact, if you look at the reports from Sri Lanka, in the nets, whatever he has done, he has just batted and it's not kept. So maybe because Ishan Kishan is there and he will be keeping, but. That also shows that the choice was not between Ishan Kishan and KL Rahul, because he's not keeping because he's not fit enough to take all the burdens together, or is he not keeping because we were very sure that it is Ishan Kishan who is going to be here. So the fitness issues are galore with this team, and they have not settled down as yet, changing and tinkering. And I think I have a premonition we may have some last minute changes in this team even before the World Cup with someone. Hope not. Nobody gets injured or so. Certainly, it looks like so. But I won't be surprised if something like that happens. It looks like so. We have Network 18 Group Sports Editor K. Srinivas Rao with us. Srini, it's a big match, India versus Pakistan. India are playing KL Rahul in their 11. There's no Shreyas Iyer. Shreyas Iyer is with back spasm. What are your thoughts with this team? Well, I don't know. Okay, let's like kind of get the basics right first. Injury is an unfortunate thing. Nobody deliberately likes to get injured, right? So that bit is not the bigger headache here. The fact that a player has gotten injured, injury can happen. It is the practice that BCCI has gone through for a while now in terms of how they have handled their injuries, how their rehab processes have been, how players have kind of abruptly been picked, dropped,
we not knowing, where they're coming from, what exactly is the update, the lack of our understanding on our part, which is thanks to BCCI and or thanks to the narrative, the lack on understanding and of understanding on our part is what makes us not believe, or rather makes us feel frustrated with what is happening. Like for example, on any other given day, you would have woken up to the news that Shreyas Iyer is injured, is not available for today's game, whatever back spasm that he's picked up and all. On another given day, you'd be fine because you'd obviously stand with the narrative that it's an injury, is bound to happen. Why exactly? I mean, I just joined and I heard you, Suramya, I heard Chetan, and I heard, I don't know the gentleman, but I heard him also, speak about why, kind of how frustrated they sounded. I think that has a lot to do with, you know where we are coming from, not where we're going. I Yeah, think that's the more absolutely. important. Yeah. Absolutely. Yes, Chaitanya, we were talking about India's playing 11 here. Let's focus on the 11 that they have set for this match against Pakistan. How strong do you think this 11 is to deal with Pakistan's pace attack? And obviously, when they'll be batting, Pakistan side will be batting. Are we good enough to deal with both batting and bowling of Pakistan side? See, Suramya, if you see on the paper, this side looks fantastic. If you go by the names, as our selectors, as our management is going by the names, if you go by the names, don't go by the form, then this side is very superb. But if you go by the form, then we have difficulty to face this fast bowling. And I still want this Indian batting lineup to attack Pakistan fast bowling and see how they behave. Let them let us put them into the pressure and let them come back from that pressure game. So let's take the momentum from the starting. But if you see as the form, Rohit not in good form, Shubman not looking good, Virat 50-50 because he got out on a ball which didn't came from the wicket. Then Ishan is in good form. KL Rahul, we have to see how he bats. Then we have Hardik Pandya, Shardul Thakur. For me, as we have seen the shots from Shardul Thakur last match, I was not impressed by him also. So I think कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्म में जो बैट्समैन है ना वो जो बेस्ट फॉर्म में एक ही बैट्समैन है वो है ईशान किशन राइट नाउ. So I think other players have to bat throughout 50 overs, do well. And Pakistan की अगर आप bowling की बात करते हैं तो Pakistan team looks in complete form right now because their bowling is doing really well and this is the best bowling attack comparison to Australia. This is the best bowling attack you will see in coming time, in coming next 2 months. So I think this match is about the form bowling, fast bowling, and out of form Indian top order. So I think, but these players, I'm telling you, these players, Rohit Sharma, Virat Kohli, Shubman Gill, these are big match players, and they can come back easily. अगर उनके बैट पे 2 बॉल ढंग से लग गए, so they can come back. They need to spend time on the wicket, and they need to play a meritful game. Because हमने रोहित को लास्ट मैच में जो देखा था, उसमें भी मतलब नॉट पाकिस्तान द मैच, उसमें भी रोहित को आपने देखा वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, एक्स्ट्रा अग्रेसिव खेल रहे थे. He doesn't need to be very aggressive. He's already a very aggressive. So he doesn't need to play a very aggressive shot. If he plays on the merit only, he will do well. And today we have And to we see. are expecting him. Yeah, we are expecting a good start from his side, at least Rohit Sharma. Now, Chetan, when we talk about the Indian side, in the first match, we saw how their top order didn't perform well, and in the second match, there were problems with fielding, especially the dropped catches. So, in both the matches, we saw the weaknesses of Team India. Now, this is the time that we're really keen to watch their strength. So far, we haven't seen their strength, only except Ishan Kishan, what he did against Pakistan. So, what kind of strengths are we looking forward to? Because we haven't seen it so far. Surabhi, we have discussed this before. I think अभी जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो सारी पेपर पर है. आप अगर नाम देखिए बहुत बड़े नाम है. रोहित शर्मा, विराट कोहली, probably ODI क्रिकेट के टॉप 10 बैट्समैन में forever, since ODI cricket started, टॉप 10 बैट्समैन में रैंक करते हैं. अगर हम बात करें शुभमन गिल की और ईशान किशन की, कैलिबर, एबिलिटी, टैलेंट कोई कमी नहीं है. ईशान किशन का फॉर्म इतना जबरदस्त है. केएल राहुल, डिस्पाइट व्हाट एवरीथिंग हैज बीन सेड, उनका रिकॉर्ड मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा है पिछले 2 सालों से. बट दिस इज ऑल ऑन पेपर. आपके पास सामने क्या है?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पिछले 3-4 महीने से प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेला है, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला है, पिछले 1 महीने से तो कोई क्रिकेट नहीं खेला है। शुभमन गिल का फॉर्म ऊपर नीचे है। नेपाल के अगेंस्ट आप रोहित शर्मा की 50 को कितना काउंट कर लोगे? फर्स्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। ईशान किशन का फॉर्म है ऑन द फील्ड। तो अभी जो भी स्ट्रेंथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिलाड़ी ऐसे हैं कि ये पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर सकते। ये शाहीन अफरीदी, जस्ट शाहीन अफरीदी। आई मीन ऐसा नहीं है कि इससे पहले बॉलर्स को हैंडल नहीं किया है। इन बैट्समैन ने इनसे बड़े-बड़े बॉलर्स को हैंडल किया हुआ है। बट उस टाइम पे रिदम था, फॉर्म था, ओवर्स थे, टाइम एट द क्रीज था। एक अलग कॉन्टेक्स्ट था मैच में आते हुए। आज की डेट में इंडियन बैटिंग, इंडियन टॉप ऑर्डर टोटली अंडरकुक्ड है। तो मैं यही कहूंगा कि जो स्ट्रेंथ है वो पेपर पर है। उस स्ट्रेंथ को आपको फील्ड पर लेकर आना है। अब डिस्पाइट a lack of preparation, you're undercooked, rain around, this and that, everything. So the strength is there. These are great batsmen in their own right, all of them. Very talented players in their own right, in all of them. But क्या वो आज करके दिखा पाएंगे? हमें उसकी जरूरत है। तो it's going to be a journey from paper to the field today. लेकिन मैं ये बता दूं, ये सारे फिटनेस इश्यूज के बावजूद, मतलब आप ये देखो, मैंने अभी ट्वीट किया है और जवाब क्या आ रहे हैं? नहीं, ये तो केएल राहुल को खिलाने की ट्रिक है। केएल राहुल को खिलाने की ट्रिक है बॉस। उनको अगर ट्रिक करनी होती तो वो आपको नहीं बताते कि वो क्यों खिला रहे हैं। बट टीम मैनेजमेंट ने भी अब बोल दिया है कि बैक स्पैज्म है। कैप्टन ने भी टॉस पे बोल दिया कि बैक स्पैज्म है। उनको वो आपको बताते नहीं, लेकिन फैंस को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये प्रॉपर फिटनेस इशू है। दिस टेल्स यू हाउ बैडली India has handled not only the fitness of these two players, but this whole run up to the World Cup. Absolutely, absolutely. मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि ये भारी ना पड़े इंडिया को वर्ल्ड कप, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे एक बात अगर मैं बोलूं आपको, तो बेसिकली जो ये मैनेजमेंट है ना, और ये जो डिसीजन ले रहे हैं लोग, मुझे नहीं लग रहा वो मतलब दे आर डूइंग वर्थ व्हाट दे आर गेटिंग। सी आई एम टेलिंग यू भाई, इसमें प्लेयर की कोई गलती नहीं है। एवरी प्लेयर वांट्स टू कम एंड प्ले। अगर मेरे को भी आप बोलेंगे ना कि वर्ल्ड कप खेलना है और मैं थोड़ा सा निकल होगा, मैं हमेशा बोलूंगा यस आई वांट टू प्ले। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे पास इतनी ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर, इतने टीम है, बड़ी प्रोफेशनल टीम्स है फिजियोस की। दे शुड टेक दीज कॉल्स, बिकॉज आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार ठीक है बड़ा नाम है तो इसको वर्ल्ड कप में होना जरूरी है। बट आपके पास अगर ऐसे प्लेयर है जो अच्छी फॉर्म में है, आप उसको ले जा सकते हैं। आप देखिए, आज अभी तक हम 2 प्लेयरों पे बात कर चुके हैं, केएल राहुल और अय्यर। अभी तक हमने बुमराह को भी नहीं देखा 10 ओवर डालते हुए। वी आर स्टिल हैव टू वेट टू सी बुमराह कैसे रिएक्ट करते हैं अगले 3-4 मैचों में। तो आप अपने 3 मेन प्लेयर ऐसे लेके आए हैं जो कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, और आपने उनको सीधा मैचेस में डाल दिया है, और वो भी एक ऐसे टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में, ह्यूमिडिटी बहुत है वहां पे, और एक ये अच्छी जगह है इंडियन प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये डिफिकल्ट सिचुएशंस है जहां पर कंडीशंस है जहां पे प्लेयर की फिटनेस चेक हो सकती है। तो आई थिंक ये वरी है कि जो आज श्रेयस अय्यर की बैक में स्पैज्म आया है। केएल राहुल अगर आज कीपिंग नहीं करते हैं तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला होगा कि वो अगले मैच में कीपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड हाउ बुमराह शेप अप फॉर द वर्ल्ड कप। So I think absolutely. So I think Chetan has taken too many players which are injured. They would have, अगर वो एक लेते ना कि ठीक है we are taking chance with 1 player, so I would have agreed. But आप 3 प्लेयर जो आपके प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, आप सोचिए अगर वो पूरी तरह फिट हैं भी तो भी उनकी मूवमेंट में कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्शन दिखेगी। देखना आप, तो आप 8 अच्छे फील्डर्स के साथ खेल रहे होंगे, जिसमें आपके पास रोहित शर्मा एक फील्डर होंगे जो कि एजेड है, उसके बाद शुभमन जवान है, विराट क्विक है, उसके बाद आप बात करते हैं हार्दिक ठीक है, फिर कुलदीप यादव जैसे एक फील्डर होंगे आपके पास, फिर 2 फास्ट बॉलर खेल रहे होंगे। तो आपको फील्डिंग में भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार हाँ, कहीं ना कहीं हम फील्डिंग में भी लैक कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली योर प्रोफेशन व्हाट यू गोना डू, इट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट पैकेज। As a complete package, when you play all these 3 players in a playing 11,
with the players, those who are having age on their side. Absolutely. Now you Chaitanya, you we'll talk about you their can run. fielding. We'll talk about their fielding a little later because right now their batting will be seen here. Srini, batting होने वाली है. Pakistan ने toss जीता था. They have opted to bowl first. What a good score looks like here by the team India. कैसा लगता है क्या होना चाहिए score? Look at the last game. I mean, you lost those couple of wickets early, Rohit and Virat and Shubman. Despite that poor start, we still managed to get to 266. So if kind of we managed to learn our lessons from where we're coming from, and I think one of the previous shows we talked about it. Key, whether it's a Shaheen Shah, whether it's a Haris Rauf, whatever you're facing against this attack, more or less you're going to play you're going to face a very good quality attack across the tournament when the World Cup arrives. So the what I feel is India's problem now, and it has been for a while now, is to combat a good mix of pace and swing. And I think our top order has consistently been a little dicey against it. Pace, can they handle pace? Of course they can handle pace. There's no doubt about it. Swing is what kind of swing? If you're at 125, 130, it's a different matter. But what you're facing here is a combination of extremely good pace, extremely good swing. That I think, whether it's Rohit or kind of anyone, they have been found susceptible against it. So, I think last time me and Jamie were talking about this. You go out there to bat, you give off, you see off those first 7 to 10 overs. You're playing here for the next 40 overs. You have to use that bit of time to settle down. Look at the previous game. Rohit was actually playing well. Then rain happened. They took that break, went out, and by the time they came back, it was Shaheen Shah Afridi was made to look like a very different bowler altogether. And Rohit, I don't know, Absolutely. maybe that like that break made him take it a little easy, and that's it. That one last bit of last thing, you see, it was just short of a complete half volley. He just like last minute it like, and he was just caught napping for that fraction of a second kind of a thing. So you got to be very very true to what you're doing for those first 7 to 10 overs. Stick there, settle down, and then I think we have a batting order to pull it off. Second is Ishan Kishan is among the first 2 3 names that comes on this team list, right? Doesn't matter whether KL Rahul plays, KL Rahul doesn't play. Ishan Kishan is among the first 2 or 3 names that It comes has on to this. be there, yeah. The moment Ishan Kishan's name comes on that list, you are not looking at KL Rahul as a wicketkeeper anymore. Then KL Rahul is only a batter. Between KL Rahul True. and Ishan Kishan, there is no doubt that I'm going to want Ishan Kishan behind the wickets. Definitely not KL Rahul. And I think why I'm saying this is because there was this conversation going on around KL Rahul and the keeping probabilities. So the moment Ishan Kishan steps into the 11, KL Rahul is not a keeper. Now, one more point I'd like to add here. Coming into this game, coming into the Asia Cup, probably preparing for the first game of the Asia Cup, first game as in the first India game of the Asia Cup, the general theory that we discussed was how KL looks dicey, kind of for this tournament. When he was even picked in the World Cup squad that was announced in the 15th, we went like, all right, are they taking a risk here? Today, we're suddenly talking about KL being available for to be part of the playing 11, which means that the so-called groin injury that whatever Rajit Agarkar and Rohit had talked about was temporary. They knew what they were doing. The physiotherapist was there. The medical team was there. They understood what they were doing, and that's why they decided to take KL with them. If today he's agreed to, if they have decided to make him part of the 11, which means the groin, whatever injury that we were talking about, was not so bad. In a similar manner, I'm not going to jump the gun on Shreyas either. If Shreyas has a back spasm, I'm going to like, whatever the reason is, I'm going to like kind of, I think what we're doing is we're getting too hypersensitive about everything. So it is also the media, by way of, constant speculation, Looking at the constant things. going after this. One guy, I believe there was one section of the media that had dropped KL Rahul and Shreyas Iyer completely.
some fortnight ago before the team was going to be selected. So don't like kind of let the selectors and let the medical team come and tell us What you're saying is what it different. is. So I have a I question. think I have a question here. yeah, What you're please saying is tell me. absolutely Well- different. What you're saying is absolutely different. Maybe they knew and all, but do you believe that it is right the way they have communicated this whole fiasco? It's No, nothing short of a fiasco. I think that's the first point I made. Why Yeah, we that's what- tend to not believe, not trust in these actions is because you, me, and all of us, we have a good understanding of where BCCI is coming from. They are not really known for. Yeah. If I had to give BCCI one award, that would certainly not be for communication. They, Yeah, that has that's been the one case. place where I wouldn't give them any point. Rather, they are poor. Absolutely. And going by how I see them, they're not going to improve in this century at least. So least less said the better, But Yeah. that said, I trust in the medical team, and that said, I have a trust in Ajit Agarkar. I'm willing to trust in this, the ability of Ajit Agarkar to take a call, and Rohit gets a lot of criticism for a lot of things. A lot of things he gets it wrong. A lot of things he's found right, but I'm not going to like kind of put Rohit under the bus right now. He's got quite a bit of Well, responsibility let's on see, his Srini, what shoulders. happens A in lot today's riding on match. his shoulders. I'd rather stand with Rohit. Absolutely. Let's see what happens today in today's match, because Rohit has already smashed a 6 in today's match. He's got a good start. Let's see what happens. And we are also keeping our hopes high with Team India. I think everyone has their hopes with Team India because they want India to win this match against by the way- Pakistan. Let's see what happens. Yes, Why are we Srini. not talking about the weather for once? If it was raining, I We- don't we think we'd be started off. talking about Ishan. We started off. We started this whole live session with all the weather reports, so we had I a good missed it. discussion on that. Thank you so much, gentlemen, for joining with me. Thank you so much, everyone, for joining with us. And stay tuned with us for all the live commentary updates from Abhimanyu and Utkarsh. All right, bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।